If you can get to a point in your career where your name becomes bigger than anything you can purchase, there is your value. There is nothing I can buy that is bigger than my name alone. So it made no sense to buy jewelry. I am me. It's pointless. In today's video, we are going to talk about the book The Art of Spending Money, a third book by the best-selling author, The Psychology of Money, and same as ever, Morgan Housel. तो उसकी third book है The Art of Spending Money. I have just finished reading this book. If you are on the Instagram, then आपने definitely उसका review देखा होगा. And if you are on the newsletter, I will put the link in the newsletter. Make sure you subscribe to the newsletter where I put a lot of things about the books, reviews, credit card, and a lot more that will help you to get better. The first lesson I learned from this book is risk versus regret thinking. Basically बहुत टाइम ऐसे होता है कि in the life you want to take risk, you want to do a lot of things, you want to do a lot of things, but there is always question in the mind कि शायद ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. There is emotional barrier, there is a mental barrier. A lot of things get involved in this. But one thing you should ask, will you regret this later? That is the only thing I follow in my life. Like this is my one of my first quote that I learned from the five regrets of living life. So that is a one book that somewhere around यहाँ पे होगी वो कहाँ पे तो book. So that lead, and the same I realized here also with the money, risk versus regret. You can risk little bit of money, but by using that money, by not doing that thing, will you regret it later? If you are going to regret it, then you should definitely go and do it. Let's not think about the money, let's not think about the saving. It's better to do that thing. It's not always about having this luxurious vacation or always spending money on a lot of things. It's about, let's say you want to buy a mobile, and you want to buy that mobile, but there is a risk that there is the mobile cost is more than 1 lakh rupees. So will you regret that later? Maybe not. Maybe not. You will not regret that later because it's okay. You are continuously using your current mobile and you are happy with your current mobile as well. It's just because of the FOMO you are going to that direction. So you know to think really wisely ki whether this is a more about the risk or this is more about the regret. If that is more about the regret, then you should definitely go and do it. The second thing I learned is when expectations grow faster than your income, then you will never be happy in your life. So as I talked about risk versus regret, the second follow-up question is more about expectations. What are you expecting from your money? What are your thoughts about your money? Like let's say if your expectations, you want a fancy car, you want a Bugatti, you want Mercedes, you want latest iPhone, you want big house, you want everything in this world, but your income is like 10,000, 20,000 rupees, then you will fall into the trap of EMI. You will fall into the trap of personal loan. You will fall into the trap of taking loans and a lot of things. So when your expectations goes higher than your income, then you will be never be happy because there is no end of expectations, there is no end of status, there is no end of कि लोग तो बहुत कुछ खरीदी करते हैं, बट क्या हर चीज की जरूरत तुम्हें? डेफिनेटली नॉट. सो आपको आपके एक्सपेक्टेशंस और आपकी इनकम, इन दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा. मे बी यू कैन कीप योर एक्सपेक्टेशंस लोअर देन योर इनकम, देन यू विल बी हैप्पी, ताकि आपको सरप्लस अमाउंट रहेगा दैट यू कैन इन्वेस्ट, दैट यू कैन यूज एनीवेयर यू वांट, एनी टाइम you want. But if your expectations goes faster than your income, then you will be never be happy because expectations कभी खत्म नहीं होंगे, but आपका income हर महीने खत्म हो जाएगा. So always remember that, try to keep your expectations as low as possible as compared to the money. Third lesson I learned in this book is try something new. Probably this lesson is around 8th or 9th or 10th lesson. It's all about that. Try something new with your money. So a lot of things people do in this life is basically वो सेम चीजें रिपीटेडली करती है. अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, करना है, ये चीजें करनी है, दोस्त ये लोग कर रहे हैं या फ्रेंड्स ये कर रहे हैं तो मैं यही करूंगा. That is what everyone does. But that's not how a life should be. It's more about experience. Like अगर आप कोई नया experience करना चाहते हो, like I have done cake making workshop, I have done poetry workshop, I have done, like I have went to the solo traveling. मैंने बहुत सारे solo travels भी किए. That was all काइंड ऑफ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. उससे मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि मैं पैसे वेस्ट कर रहा हूँ या पैसे कुछ चीजें खत्म कर रहा हूँ. इट्स मोर अबाउट आई एम क्रिएटिंग मेमोरी फॉर माई सेल्फ, एंड मे बी दैट विल वर्कआउट और मे बी नॉट वर्कआउट. जैसे कि कुछ आप नई चीज ट्राई करते हो तो आपको शायद वो अच्छी लगती है और शायद बुरी भी लगती है. अगर अच्छी लगे तो दैट विल बिकम ए मेमोरी फॉर यू. इफ नॉट, देन दैट विल यू विल सी कि अच्छा दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी, आई शुड नेवर डू दैट अगेन.
बट अगर आप कभी ट्राई ही नहीं करोगे उस पैसों के साथ, तो व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट? सो दिस बुक इज नॉट ओनली अबाउट द सेविंग मनी ऑल द टाइम, इट्स अबाउट understanding your life, how money can make you happy, how using money in a right way can make you happy. It is all about that. So I will definitely recommend reading this book. But try something new. This lesson is more about कि चीजें लाइफ में बहुत सारी चीजें ट्राई करो, तभी आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको डेफिनेटली पैसे लगेंगे, कुछ पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे, बट डोंट थिंक अबाउट दैट wasting money. It's more think about that you are either putting that investment or you are putting that to learn something new, and वो शायद आपको लाइफ टाइम के लिए खुशियां भी देके जाए. So it's more about trying something new to get little bit of happiness. The lesson is look at them. So it's more about envy, it's more about the jealousy जो हम स्टेटस गेम प्ले करते हैं कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे बाइक चाहिए, जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड हैव दैट. मे बी उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए इसलिए वो है. बट इफ यू गेट इन टू दैट गेम ऑफ प्लेइंग अ स्टेटस गेम, या इफ यू गेट इन टू द गेम ऑफ प्लेइंग द सोशल मीडिया गेम, कि जहाँ पे आपको हमेशा दिखाना है कि मैं खुश हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, यू विल बी नेवर बी हैप्पी. यू विल बी डेफिनेटली नॉट हैप्पी, बिकॉज आपको हर दिन कुछ ना कुछ लोग को दिखाने के लिए चाहिए होगा कि अच्छा आज मैं यहाँ पे हूँ, कल यहाँ पे हूँ. शायद आप कंटिन्यूस ऐसे स्टोरीज वगैरह पोस्ट करोगे तो लोग आपको पूछेंगे कि यार आज तो कहाँ पे घूमने नहीं गया. नाउ जस्ट बिकॉज यू हैव टू मेंटेन दैट स्टेटस, you will have to spend money, you will have to travel. So it's better to keep your life little bit private. It's I'm no one to tell you to life private रखनी चाहिए या नहीं. It's just more about don't get into the social media status game. That is the only thing I will suggest. Otherwise your life will become hell. I have seen a lot of my friends, family friends getting into the status game. They have to post regularly every day. उन्हें कुछ ना कुछ पोस्ट करने के लिए चाहिए, एवरीडे लोग को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए कि मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं वहां पे हूँ. लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए चीजें करनी है. सो इफ यू आर इन टू दैट स्टेटस गेम, प्लीज स्टॉप. उससे आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला, आपके सिर्फ पैसे ही वेस्ट होने वाले. सो one of the important lesson that is from this book is don't pay status them. Just look at them and ignore them. That is the only thing that you should do. The last lesson I learned from this book is maybe you already have enough. शायद आपको पता नहीं होगा, शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, शायद आपने कभी एज्यूम नहीं किया होगा, बट शायद आपके पास आपको जो जो चाहिए वो डेफिनेटली आपके पास है. आपके पास रहने के लिए घर है, खाने पीने के लिए 3 टाइम्स यू कैन ईट, वीकेंड पे आप बाहर घूमने जा सकते हो, कभी मन करे तब मूवी देखने जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो, वीकेंड्स पे बाहर होटल में जाके खाना खा सकते हो, साल में 2-3 बार आप शायद ट्रिप के लिए भी जाते हो. तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो देन मे बी यू ऑलरेडी हैव इनफ. इट्स जस्ट दैट तुम उसको उस लेंस से नहीं देख रहे कि शायद आपके पास सारी चीजें है कि नहीं है. जस्ट लुक एट द अदर पीपल, जस्ट लुक एट द लोअर कॉस्ट, जस्ट लुक एट जस्ट आपके यहाँ पे भी स्लम एरिया वहां पे होना, थोड़ी टाइम के लिए वहां पे जाके देखना, देन यू विल रियलाइज कि आपके पास कितनी सारी चीजें हैं कि जो उनके पास नहीं है. एंड वी शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट. लाइक आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव बिल्ड, वॉट एवर आई हैव. आई नेवर थिंक अबाउट द स्टेटस गेम, आई नेवर थिंक अबाउट कि यार सबसे बेस्ट चीजें मुझे चाहिए, क्या इन चीजों से मेरी सारी नीड्स कंप्लीट हो रही है, देन मे बी आई ऑलरेडी हैव इनफ. So I have learned this. One of the important lesson from this book is maybe you already have enough. It's just that you have to figure out those things. These are some of the examples जो मैंने इस book से बताई है, The Art of Spending Money. I really enjoyed reading this book. You should definitely try reading this book. I will put the link in the description. You can go and buy this book, and make sure you subscribe to the newsletter and do join our WhatsApp channel as well, where we share a lot of things about the free deals, credit card, and a lot of other about the books. So that's all for today's video. See you in the next one. Tada.